हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और इसको करेंगे, इस पूरे चैप्टर को कवर इस वीडियो में, इसके सारे कंसेप्ट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस अपने फिंगर टिप्स पे पाने के लिए जो कि हम रोज़ लेकर के आते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी सच वीडियोस। और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट आपको पसंद है और आप जानते हैं किसी को जिसको इसको ज़रूरत होगी, आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने उन लोगों को, अपने रिलेटिव्स को आप वो वीडियोस शेयर कीजिए ये चैनल, ताकि उन्हें भी ऐसा ही कुछ नया सीखने को मिले। सो लेट अस स्टार्ट विद कि आज हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर में। We will cover what is breathing, what is respiration, ये दो प्रोसेस क्या हैं और कैसे डिफरेंट हैं। Then we will learn about the aerobic respiration and anaerobic respiration. Also, fermentation क्या होता है ये जानेंगे। Then we will learn about the muscle cramps, breathing mechanism, कैसे we do breathing, what is the breathing mechanism, what is the breathing rate, and how the insects, fish, frog, plants do breathe, इन सब के बारे में भी जानेंगे। So, how we breathe? We inhale and then we exhale. ऐसा ही करते हैं। So, सबसे पहले breathing होती क्या है? It is the process during which we breathe in air having oxygen and breathe out air which is rich in carbon dioxide. Clear? ये हमारा breathing का process है। We breathe in the air and we breathe out. Then the air is rich in oxygen that is transported to all parts of our body that ultimately reach each of the cell. ये हमारा breathing process करता है। तो respiration क्या है? Respiration is a inner side process. Respiration ऐसे outer side का process नहीं, वो हमारी body के अंदर होता है। The first we do breathe, oxygen अंदर गया, then that inhaled oxygen is then utilized by the cell for the respiration. वो जो inhaled oxygen अभी हमने breathing के थ्रू लिया, वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जब सेल्स तक पहुंचता है तो ईच सेल में द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस। वो क्या है? वो ये कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट रिलीज द एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज द एनर्जी इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज रेस्पिरेशन। समझ आया रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस? ब्रीदिंग, we just simply breathe in, breathe out the air. That is the breathing. That is not respiration, that is breathing. But respiration is the process जो कि cells में होता है, where the breakdown of food happens. Okay? Food से वो energy release होना due to oxygen का presence. That is respiration. I hope आपको ये difference clear हुआ होगा. Then respiration कितने types के? Aerobic and एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है, एयरोबिक मतलब एयर। इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, व्हेन द रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी, ब्रेकडाउन ऑफ फूड कंपोनेंट, न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी हैपेंस विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग एरोबिक, glucose is broken down into carbon dioxide, water and energy in the presence of oxygen। आप यहाँ देख सकते हो, this is glucose। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया है इसने? ब्रेक डाउन हुआ इन द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के रूप में। ओके, अब बात करते हैं एनारोबिक की। When the breakdown of glucose is taken place without the presence of oxygen, अपोजिट ऑफ एरोबिक। एरोबिक मतलब एयर यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन, वेयर द एनर्जी गेट्स ब्रेक डाउन, द फूड गेट्स ब्रेक डाउन। देन एनारोबिक, व्हेन द फूड गेट्स ब्रेक डाउन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। द ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे जो फूड कंपोनेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी नहीं रिलीज करते। वो क्या रिलीज करते हैं? इंटरमीडिएट कंपाउंड्स,
like they release alcohol, carbon dioxide, energy, not the water. Okay? क्लियर है इन दोनों का डिफरेंस. ऑक्सीजन के प्रेजेंस से वी गेट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. बट here also there is energy, but not that, very less energy, and more of the alcohol component is released. Aerobic respiration happens in most of the animals, most of the people, that is humans, cows, fishes, frog, etc. And anaerobic happens in the yeast and bacteria. Clear? Now what is fermentation? Yeast is a single cell organism. You can see in any anaerobic respiration, yeast produce alcohol as the byproduct, which is used for making wine and beer. Suppose here is the sugar. When yeast is added to what it does? Yeast do the anaerobic respiration. That just gives the carbon dioxide and alcoholic component, जिससे कि आगे wine, beer and everything. So this process that yeast do with a something or else of anaerobic respiration, that is fermentation. और fermentation process अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है, अलग अलग कुकिंग प्रोसेस में यूज़ होता है. लाइक the carbon dioxide produced by yeast is then used to make the bread making industry, wine and beer make करने में हुआ ही. So that is how fermentation is useful. Then anaerobic respiration in muscles. कई बार when we have lack of oxygen, then our body cells, especially in the muscles part, they just do the anaerobic respiration. Cells में anaerobic respiration हो जाता है. क्यों? Because the डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ तक उतना ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, टेम्पररी डिफिशियंसी थी, उस वजह से वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है कभी कभी. सो दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन विद द फूड, व्हाट इट रिलीज? यस, इट रिलीज एनर्जी एंड इट रिलीज द कंपोनेंट कॉल्ड लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड रिलीज होता है अगर इन द मसल्स फॉर द शॉर्ट टाइम there is the anaerobic respiration happens, then this kind of thing is get released. When we perform heavy exercise, और anaerobic respiration क्यों हुआ? क्यों वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पड़ी? When we do any perform heavy exercise or running, cycle, weightlifting, so many things, then we require large amount of energy. To reach that energy requirement, our muscle cell perform anaerobic respiration. Clear? क्योंकि उतनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं थी, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होगा, आप उस समय करो तो हर जगह थोड़ी थोड़ी कमी हो जाती है. तो मसल सेल्स में इस वजह से उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है एट अ पॉइंट. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फूड इज देन पार्शियली ब्रोकन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मिंग द लैक्टिक एसिड. एंड एनर्जी इस टाइम पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलीज होती है मसल सेल्स में, वो बहुत ज़्यादा होती है. वो एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं, रह क्या जाता है? लैक्टिक एसिड. That lactic acid presence helps us and causes us the muscle cramps, the pain. Clear? Now let us talk about breathing. हमने starting में breathing के बारे में पढ़ा था कि that we breathe in air with oxygen and breathe out the air with carbon dioxide. That is the basic breathing process. We take inside the air rich in oxygen and air rich in CO2, carbon dioxide gives out. This is the breathing. अब इसमें आया प्रोसेस इनहेल. टू प्रोसेस हुए, इनहेल एंड एक्सहेल. तो इनहेलेशन मतलब, इनहेल या इनहेलेशन का मतलब हुआ कि टेकिंग इन ऑफ एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, उसको अंदर लेना. एयर रिच इन ऑक्सीजन, टेकिंग इन द एयर इज द इनहेलेशन. एंड देन एक्सहेलेशन, द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज द एक्सहेलेशन. एक्सहेल मतलब सांस को बाहर छोड़ना. इनहेल मतलब इन यानी लेना, अंदर लेना द एयर. ओके, सो ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. ब्रीदिंग इन क्या हुआ? इनहेलेशन प्रोसेस. ब्रीदिंग आउट क्या हुआ? एक्सहेलेशन प्रोसेस. क्लियर है आपको? एंड वन ब्रीथ का क्या मतलब हुआ? वन ब्रीथ इज इक्वल टू वन इनहेल एंड वन एक्सहेल टुगेदर. ठीक है?
चलिए अब हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं उसका ज़रा मैकेनिज्म देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं. वी टेक इन एयर थ्रू द आवर नॉस्ट्रल्स, we inhale the air, then pass through the nasal cavity here, and then that passes through the trachea and reaches to the lungs. Through the windpipe it just goes and reaches our lungs. Then the lungs here is present in the chest cavity. ये हमारी chest cavity है, ये आपको दिख रहा है. This kind of chest cavity is there, and इसके अंदर हमारे ये lungs, our organs are present. ये किससे सराउंडेड है? विद अ बोनी स्ट्रक्चर ऑफ केज स्ट्रक्चर, दैट इज रिब्स. इसको हम बोलते हैं रिब्स. ये थोड़ा केज टाइप का स्ट्रक्चर है टू जस्ट सेफ गार्ड आवर ऑर्गन. सो इस टाइप के स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर क्या है? रिब्स. ओके. द लार्ज मस्कुलर शीट एट द बिलो दिस, दैट इज द फ्लोर फॉर द लंग्स. ये लार्ज मस्कुलर शीट जो है, दिस इज नोन एज डायफ्राम. क्लियर? Now how the process happens. When we inhale, see, we are inhaling here the air, it's going inside. As it's going inside, the lungs expand. See, the lungs expand and diaphragms get pushed down. वो वापस हुआ. ठीक है, नीचे जा रहा है, ये डायफ्राम नीचे जा रहा है, पूरा चीज़ एक्सपैंड करेगा, इट नीड्स मोर एरिया, so it just pushes out in all directions. And as we exhale, it just contracts down back to the original form. जैसा पहले था, जैसा ओरिजिनल था. जब हम एक्सेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ी, ब्रीथ आउट, देन वी जस्ट हैव दिस, वी जस्ट कॉन्ट्रैक्ट आवर ऑर्गन बैक टू द नॉर्मल केस. इनहेल किया था तो एक्सपैंड हो रहा था, एक्सेल किया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ. क्लियर? In the, you can especially see the diaphragm thing. When we breathe in, it just goes down, and we breathe out, it contracts up. Clear? Also, we have the percentage of oxygen that is present in inhaled air is very much greater than the presence of CO2, and in the exhale, the CO2 is greater, but also it's not like that only CO2 is getting released. Oxygen will also get released in some percentage. Clear? Now, just do this, exhale and inhale. Relax yourself and do this exercise for quite a minute. Just exhale your and just inhale in. Did you feel relaxed? इसलिए क्योंकि आपने इसको बहुत ही शांति से, calm down होकर के, you just do this process. So that's rate. That is the breathing rate. The number of time a person breathes in a minute is the breathing rate. कितनी टाइम उसने ब्रीथ किया, कितनी टाइम उसने इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस किया in a minute, that is the breathing rate of a person. And in an adult human being, the normal breathing rate is 15 to 18 times in a minute. It is somewhat faster in women than men and children. And in children, it is higher, about 20-30 times in a minute than the adults. So you can see here is an average rate for the different ages of person. Whether newborn, it's 30 to 40, infant 30 to 60, toddler 26 to 32, then child 20 to 30, adolescent 16 to 20, and adults 16 to 22. That is the breathing rate of an average person. Clear? Now when we do heavy exercise, we do so much running and everything, it can increase. The breathing rate will increase. Why? Because the food gets broken faster inside and thus makes us feel hungry, and we also, oxygen is getting used up, so we need more oxygen, so breathing rate हमारा increase हो जाता है when we do some heavy exercise. This increased breathing rate provides the greater amount of air entry, and hence blood absorbs the air, oxygen at the faster rate. So that's why we heavily breathe after some heavy exercise or thing, or after a running. Clear? And while we sleep, the breathing rate of our body is the slowest.
because at sleep we are not doing anything, so no energy or less energy is required to just maintain our body temperature, maintain our body basic mechanism. So उस समय हमारा जो breathing rate होता है वो सबसे slowest होता है. We just do the and maximum कब होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग, वेट लिफ्टिंग और ये सब, तो हमारा ब्रीदिंग रेट बहुत ही हैवी होता है. When we feel drowsy, sleepy, tired, we yawn. क्यों करते हैं? Because our breathing rate slows down and body does not get the required sometimes oxygen. So that is why we need to just yawn and take a deep breath so that we get more oxygen supply to reach our body. Clear? रेस्पिरेशन अलग अलग, अभी हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा. अब बात करते हैं इंसेक्ट्स और डिफरेंट थिंग्स के बारे में. कॉकरोच और ग्रास हॉपर्स ऐसे इंसेक्ट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन? ऑकर्स थ्रू द पार्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड स्पैरिकल्स, द स्मॉल ओपनिंग्स. देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब इन द सी. You can see in the diagram there is a network of air tubes called trachea. Then air enters through spiracles, passes through trachea tubes, and then the respiration happens. Then earthworms, here you can see earthworms कैसे respire करते हैं? Earthworm respires through the skin. They has a moist slimy skin and respires through the skin pores. They just inhale oxygen, exhale carbon dioxide. Clear? Then respiration in fish. See, inhaling, how is inhaling? With the mouth open. Here is the gill. In the gills, it just gives the air. Then how it's inhaling, the mouth is closed, gill cover here. It is closed. जब इसने क्या किया? इसने जब breathe in किया था तो ये closed था. But as it's breathing out, ये gill cover open हो गया and it just gives out. Mouth से ये exhale नहीं करते, ये gills के opening से exhale करते हैं. समझ आया difference क्या है? Inhale किया mouth से fishes ने, but exhale from the gill opening. It just exhale. So how do fish respire? Fishes respire through the special organ called gills. Then gills have blood vessel to exchange the respiratory gases. That's how they do the process. Next in the frog. Frog कैसा है? Frog तो पानी में भी रहता है, frog ज़मीन पे भी रहता है. Frog has two ways to respire. Frog is an amphibian, so they have lungs to breathe when they are outside of the water and they breathe through skin when they are inside the water. Clear? ये दो तरीके से breathe करते हैं. इनके पास lungs भी है. Then they breathe through the mouth that reaches to the lungs and the respiration happens. And when they are in water, they breathe through the skin. Then how the respiration in plants happen? Plants also respire. हमने तो अभी तक उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सीखा, ये देखा, बट इनमें रेस्पिरेशन भी होता है. They do cellular respiration mostly in the night time. As the sun sets, the plant starts to respire. In that, they take in oxygen and gives out carbon dioxide. Photosynthesis में they gives out oxygen, take in carbon dioxide. But in cellular respiration, they take in oxygen, the food is present in their leaf, and at night that respiration occurs in the cells of their plant and that releases the carbon dioxide. How do they release carbon dioxide? Through the small openings present in the leaves bottom side, that is the stomata. Stomata in the plant leaves helps in the release of carbon dioxide and the cellular respiration happens. And in the roots, that happens through the hair roots, hairs of root. Okay. So I hope आपको ये सारे points clear हुए होंगे, समझ आया होगा.
सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, समझ आया होगा कि ये सारी चीज़ें, हाउ द रेस्पिरेशन हैपन्स, हाउ वी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ द ब्रीदिंग मैकेनिज्म, हमारे लंग्स के बारे में और अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो अलग अलग इंसेक्ट्स, एनिमल्स और इन सब में प्रेजेंट है, उन सब के बारे में आपको समझ आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब to never miss any of these videos because we come up new video every day.